Hello students, the question is a small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerine. The velocity of ball becomes constant after some time. If the density of glycerine is half the density of ball, then the viscous force acting on the ball will be, and the given options are option 1 3 by 2 mg, option 2 mg by 2, option 3 mg and option 4 2 mg. So the problem is based on the topic fluid mechanics, and in this problem the situation is something like this, that a ball is dropped in a liquid, which is glycerin in this case. After some time it reaches a fixed velocity or a terminal velocity. At that particular instant of time we have to calculate the viscous force acting on the ball. Now viscous force is a force which is a kind of a frictional force which opposes the motion of the object going inside a liquid. So when the ball is dropped, our viscous friction force of 0 value is acting because the viscous friction is given by the formula 6 pi eta rv. So in the start v is equal to 0, so the viscous friction force is 0, but as the ball goes down its velocity becomes increasing, and when its velocity becomes increasing, from this formula we know that the viscous friction force is directly proportional to the velocity. So as the velocity goes up, so the viscous friction also goes up. Now the forces acting on the ball are there, total of 3. There are 3 forces acting on this ball. First one is the gravitation force acting downwards. Second force is the buoyant force which is acting upwards, and third force is the viscous friction force which is also acting upwards. So now when the viscous friction force and the buoyant force, their sum becomes equal to the gravitation force mg, then at that instant of time the velocity, the terminal velocity, becomes constant, and at that particular instant of time we have to calculate the viscous force. So in this way we have to balance the force. So by balancing the force we can write the equation as m into g, which is the weight acting downwards on the ball, and the buoyant force, buoyancy force acting upwards, and the viscous friction force acting upwards. The buoyancy force is given by the formula the volume. The volume here is taken as the volume of the ball because the mass displaced by the ball is the complete volume of the ball, as the ball is fully immersed in the liquid. So this volume multiplied by density of the liquid. The density of the liquid is rho upon 2. Suppose we take the density of the ball as rho, then the density of liquid becomes rho upon 2. So the density we have taken here is rho upon 2, and this is multiplied by this thing is multiplied by g, then plus the viscous friction force which we have to calculate. So mg is equal to v rho by 2 g plus fv. Now we know that this v into rho, this thing is equal to mass of the ball. The volume of the ball multiplied by the density of the ball is nothing but the mass of the ball. So we can write in this place as m, v into rho is m, divided by 2 into g. So mg equals to mg by 2 plus f of v, the viscous friction force, fv. So in this way this fv or the viscous friction force comes out to be mg minus mg by 2, or this value is mg by 2. So we can say that the viscous friction force is mg by 2. So option 2 is correct here. तो यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई है फ्लूइड मैकेनिक्स की. इसमें बॉल जो है वो गिरना स्टार्ट करती है किसी एक लिक्विड जो कि यहाँ ग्लिसरीन दिया गया है. कुछ समय बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर लेती है जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं. उस समय हमें बताना है कि विस्कस फोर्स इस बॉल पे कितना लग रहा है. यहाँ पे अगर हम फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस 3 फोर्सेस हैं टोटल. एक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है. एक फोर्स बुएंट फोर्स है, फोर्स ऑफ बुएंसी इसको हम बोलते हैं, वो अपवर्ड लग रहा है. और विस्कस फ्रिक्शन फोर्स जो एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स है लिक्विड्स और सॉलिड्स के बीच में, वो एक्ट कर रहा है एफ वी. नाउ एफ वी या विस्कस फ्रिक्शन फोर्स दिया जाता है फॉर्मूले से 6 पाई ईटा आर वी. यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉल है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है.
स्टार्टिंग में जिस समय बॉल ने गिरना स्टार्ट किया होगा उस समय इसकी वेलोसिटी ज़ीरो रही होगी, यानी कि विस्कस फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज़ीरो रहा होगा। लेकिन जैसे ही बॉल नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करती है उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, और उसकी वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से विस्कस फ्रिक्शन फोर्स भी जो है वो बढ़ने लगता है। और जब विस्कस फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, और क्योंकि वो एडअप हो रहा है बुओयंट फोर्स के साथ, एक स्टेज ऐसी आएगी जब इन दोनों का सम बैलेंस कर देगा ग्रेविटेशन फोर्स को, एम को। हमें ठीक उस इंस्टेंट पे एफ वी यानी कि विस्कस फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। तो एम जी इक्वल्स टू बुओयंट फोर्स एफ बी प्लस द विस्कस फ्रिक्शन फोर्स एफ वी। बुओयंट फोर्स की बात करें तो बुओयंट फोर्स बराबर होगा द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। यहाँ पे अगर हम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की बात करें, तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल, तो रूल हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ द डेंसिटी ऑफ बॉल। तो उसके अकॉर्डिंगली रो एल की वैल्यू रो अपॉन टू हो जाएगी। तो यहाँ हमने रो बाई टू पुट किया है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो बराबर होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये बराबर होगा मास ऑफ द बॉल। मास ऑफ द बॉल यहाँ पे गिवन है हमें कैपिटल एम, तो वी इंटू रो की जगह हम कैपिटल एम पुट करेंगे। तो इस तरह से जो हमारी इक्वेशन आती है उसमें एम जी अपॉन टू को जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो विस्कस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी एम जी माइनस एम जी बाई टू, विच इज इक्वल टू एम जी बाई टू। तो यहाँ हमारा आंसर एम जी बाई टू करेक्ट होगा। So this is the whole explanation of this problem. Hope you understand it. Thank you.